Hello everyone, welcome back to Sports Covery and Curious Harry. Arnava is going to be a little late today. Um, but yeah, we have some things to discuss. The Indian football calendar for the 24-25 season is out here in, and there's some interesting takeaways from this. We'll break it down and we'll sort of go through things and we'll see how it sort of shapes up compared to last season. I mean, the ongoing season. So, yeah, first thing I think it doesn't remain unchanged, which is the Durand Cup is going to happen before the start of the season. It's going to happen in July. Did it happen in July this year or September? I'm not able to remember. I think it happened in September, right? It happened in August. It happened in August. And Oh yeah, September, yeah, we in last week of September we started the yeah. ISL. ISL. Correct. Uh, So yeah, so July 1 month earlier. How do you think this thing sort of affecting the rest of the calendar? First of all, hello to everyone, and definitely it's a good to see. Finally, they are releasing the calendar couple of months ago to you can say to prepare accordingly. And I think last season भी उन्होंने announcement किया था, but the biggest question was the implementation. If we talk about this senior level first, then I think there is a not much changes. I think the biggest change is Super Cup format. Now Super Cup is going to run concurrently with the ISL and I League, so that's a positive change. I would say that's a good step, and I think there is a lot of demand from the fans and everyone that this Super Cup should be, or Federation Cup, whatever the name will be, will run throughout the ISL and I League. जैसे आपका प्रीमियर लीग में एफए कप होता है, कोपा डेल रे होता है ला लीगा में, और बाकी जगह पे भी कोपा Hmm. इटालिया और जिस तरह से है, आई थिंक उसी तरह से उसको लाया जाएगा. तो दैट्स अ पॉजिटिव चेंज आई वुड से फॉर सीनियर लेवल. अगर हम बात करें बाकी जैसे आपने बोला दुरांत कप पहले स्टार्ट हो रहा है. आपका आईएसएल सितंबर 14th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है. आई लीग इन 19th ऑफ अक्टूबर, जो कि 13th ऑफ अप्रैल तक चलेगा. सो अब जो एक वो बैरिकेड था कि आपको 30th मार्च से पहले सीजन खत्म करना ही है ड्यू टू दी आईपीएल क्लैश, वो आई थिंक इस सीजन से ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि इस सीजन भी आपकी जो लीग है, चाहे वो आईएसएल आई लीग एंड आई लीग 2, तीनों यहाँ पे आपकी 30th अप्रैल तक चलने वाली है. तो बेसिकली इंडियन कैलेंडर जो अभी स्टेप अप होता हुआ दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि आपका जून एंड या फिर 1 अगस्त से आप काउंट कर लीजिए कि 1 अगस्त से आपका 30th अप्रैल या फिर 10th ऑफ मई तक आई थिंक तो कहीं ना कहीं आपका शेड्यूल रहेगा, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से सही टाइम भी है, क्योंकि वी ऑल नो कि इंडिया की जिस तरह की जियोग्राफी और है सारी चीजें. तो मई, यू कैन से कि मई मंथ इज द हॉटेस्ट मंथ इन द इंडिया, ऑल अराउंड द इंडिया, कि जहाँ पे जो गर्मी क्या बोलते हैं कि वो है, हीट काफी ज्यादा पड़ती है. तो उसमें मैचेस करना आई थिंक दैट्स not a practical thing, to be honest, and that's why उस month में नहीं रखा गया. And that's a good thing. And I think if you see August to April, I think that's almost your, you can say, 9 months. So that's I think a good season for India to have. And August is a month also there, because in July there is a lot of the part, there is a, you can say कि rainy season, so that's also affect a lot of things. So I think it's a एक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा तो दैट्स अ गुड थिंग. एंड दिस सुपर कप चेंज इज पॉजिटिव चेंज आई वुड से. Yeah. Vignesh thinks the youth leagues will be divided into 3 months each. Is I think what he's trying to say. Hiren, you think that's what it is? नहीं, आई थिंक इफ उसने उन लोगों ने क्लेरिफाई नहीं किया है कि Yeah. 9 मंथ में 3 मंथ अंडर 3 मंथ अंडर 13, 3 मंथ अंडर 15 और 3 मंथ अंडर 17 चलेगा, ऐसा क्लेरिफाई अभी तक नहीं किया है. सो लेट्स सी, अगर ऐसा होता है तो फिर तो उसका कोई मतलब वो Yeah. क्या बोलते हैं, सेंस नहीं बनता कि 3-3 महीने आप तीनों लीग वो चलाओगे. तो Exactly. वाली चीज है, बट आई थिंक मे बी ऐसा भी हो सकता है. आई थिंक उनका फॉर्मेट कैसा आएगा पहले तो वो आई थिंक इंटरेस्टिंग सा रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है उसमें उन्होंने बोला है कि हर किसी स्टेट एफए को यहाँ पे अपने वहाँ पे एक यूथ लीग करवाना पड़ेगा. अंडर 13 का हो तो अंडर 13 का करना पड़ेगा, और उसका जो चैंपियन होगा या फिर उसके बाद ही आप उसको नॉमिनेट कर पाओगे कि आप एआईएफएफ की जो यूथ लीग है उसमें पार्टिसिपेट करोगे. सो उस सेंस में आई थिंक लेट्स सी पहले फॉर्मेट क्या आता है, उसके बाद ही ज्यादा वो उस चीज पे ज्यादा क्लियरिटी आएगी. दूसरा जो पॉजिटिव चेंज है इस कैलेंडर में जो इस सीजन से है, वो ये यूथ लीग वाला है कि इन लोगों ने अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 9 मंथ के लिए यहाँ पे बोला है. अब किस तरह से होती है, ये लास्ट टाइम भी ये जो करंट सीजन चल रहा है उसमें भी बोला था, लेकिन अभी तक अंडर 17 यूथ लीग ही आपका हुआ है और चल रहा है. अंडर 13 और अंडर 15 तो अभी तक नहीं हुआ. सो लेट्स सी, इम्प्लीमेंटेशन विल बी द बिगेस्ट टास्क कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. एंड एक चीज और कि किस तरह से आप जो ये यूथ लीग है पर्टिकुलरली,
उसको कितने फेयर तरीके से ऑर्गेनाइज करवा पाते हो, क्योंकि आपने भी राहुल नोटिस किया होगा कि सिवाय आईएसएल के बाकी जितनी भी लीग होती है, चाहे आई लीग 2, आई लीग, उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन उसकी क्रेडिबिलिटी के रिगार्डिंग उठते हैं, एंड यूथ लीग में तो पर्टिकुलरली एज फ्रॉड भी वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। सो किस प्रोफेशनल वे में क्या एक फेयर मैनर में किसी को यहाँ पे क्या बोलते कि क्लियर एडवांटेज ना देते हुए हो पाता है कि नहीं हो पाता, दैट विल बी द बिगेस्ट यू कैन से की चैलेंज। Yeah. So we're saying India into the final. Yeah, the under 19s cricket team is into the final. Beat South Africa in a tight game. Back to the football. He is talking about this SAF under 19 women's championship. So India also reached in final of that Okay, SAF this under after. 19 women's championship. So a couple of I saw the cricket, the DP. That's why. जैसे साउथ अफ्रीका के साथ था ना। Yeah. That's why I assumed he was talking about the cricket. But yeah, Purva Sarkar also saying that Durant Cup bhi ISL के साथ करना चाहिए. I think that become too much. I think the problem is ISL is not a weekend only tournament, which you see in other countries, and we don't have that format, that structure to allow so many cup games in the middle. But I think the Durand Cup is basically it's Army's tournament, so it's not a AIFF tournament also. Yeah, So exactly. in that sense, I think it's a pre-season tournament, and I think that's a good thing rather than including into this calendar. I think that's a good thing to have a pre-season tournament where there is a not lot of you can say pressure, and clubs also you can say a little bit player relax, they try out some players which they might be using in the upcoming season. So in that way, I think it's a little bit light, you can say कि headed tournament rather than you can say too much. जैसे I think आपके यहाँ पे प्रीमियर लीग में वो पहला मैच होता है ऑफ द एफए कप विनर एंड आपका हाँ कम्युनिटी शील्ड का, तो उस तरह का आप बोल सकते हैं कि दैट्स एक आपकी जो हिस्ट्री है उसको भी कंटिन्यू करते जाइए आप, एंड उसके साथ चलिए, तो आई थिंक उसी सेंस में उसको रखना चाहिए। एंड एक चीज आपकी देखिए, दुरान कप को अगर आप बीच में ऐड कर दोगे तो अभी से आपका इतना कैलेंडर का इश्यू आ रहा है, तो उसके बाद तो और ज्यादा भाई वो बड़ा हो जाए। Yep. Again, just to clarify, the ISL begin mid-September, I League in mid-October, and the IWL in late October. And all your senior leagues will finish before the end of April 2025, like Hiren already said. Yeah, Hiren, these are sort of, again, like some of the main things. Another thing One main thing is Rahul is regarding IWL 2. Next season IWL 2 भी start हो रहा है, so that's also positive change, I would say. That's a good step कि वुमेन्स में भी आपको दो एक यू कैन से टॉप लीग एंड फर्स्ट डिवीजन दोनों देखने को मिल जाएंगे, so that's a positive change, I would say. Yep. Hiren, how do you see the teams being divided? Is there any information on how many teams will be eligible for IWL 1, IWL 2? Because what I've seen, I think in the IWL, again, like I've spoken about this, there's a dearth in quality between a couple of top teams and the rest of the pack are chasing. They're not there yet. So you think there should be उसमें अगर आप रिपोर्ट में थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो वहां पे उन्होंने कुछ IWL 2 के क्राइटेरिया क्लेरिफाई किए हैं, उसमें भी सेम ही रखा है कि स्टेट एफएस को अपने वहां पे लीग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी और मिनिमम इतने मैचेस होने चाहिए, और उसके बाद जो लीग विनर है उसके बेसिस पे वो लोग अपने हिसाब से रैंकिंग देके मे बी 7 to 8 टीम्स को यहाँ पे करवा सकते हैं। आई थिंक 8 टीम्स इन IWL 2 वुड बी I think 6 to 8 would be a good thing, and 8 in the IWL will be perfecting, I think, top league. So that will be the, you can say, you don't harm too much in the, you can say, competitiveness wise also. Fair enough. Need more number of teams in the in I League 2, Hiren? You think so? I think देखिए टीम बढ़ाने के लिए तो आप कितनी भी ला सकते हो, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिवनेस, हाउ यू आल्सो not affect the competitiveness of the league. That is the big you can say की thing जो यहाँ पे AIFF को आगे आने वाले टाइम में, चाहे वो ISL हो, I League हो, I League 2 हो, उसको अभी जो लेवल पे उससे आगे ही लेके जाना है। We have to be careful कि कहीं ना कहीं टीम बढ़ाने के चक्कर में हम किसी भी लीग की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको कम ना कर दें। I think that point should be, you can say की consider whenever the changes will be made. So वो वाली चीज है। एक राहुल मैं आपसे जानना चाहता था रिगार्डिंग दिस कंटिन्यूटी। मेरे को एक थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्लब है, जैसे कोई बेंगलोर से ही क्लब है, तो उसने पहले स्टेट लीग खेलेगा वो, फिर ये जो क्राइटेरिया रखा है कि आई लीग 3 में यहाँ पे आपका स्टेट लीग का जो विनर होगा उसको आप क्या अलाउ करेंगे। मान लीजिए कि स्टेट लीग में उसने, हम सब आपको भी पता है कि स्टेट लीग हर एवरी स्टेट में ऑलमोस्ट 2 मंथ की ही होती है, 2 to 3 मंथ, उससे ज्यादा नहीं होती है, एंड मे बी
आप 8 to 10 टीम्स का ही होता है। सो मान लीजिए कि आपके 15 से 16 मैचेस वहां पे उन्होंने खेला, 16 मैचेस, देन द क्लब यू कैन से कि क्वालिफाई फॉर दी आई लीग 3। आई लीग 3 Hmm. का यहाँ पे एएफएफ ने भी इस रिपोर्ट में क्लियरली बोला है कि इट्स नॉट अ लीग, इट्स अ प्ले ऑफ टूर्नामेंट फॉर दी आई लीग 2। तो जैसे Yeah. इस सीजन हुआ था उसी तरह से होगा कि आपको प्लेऑफ में खेल के जाना है। सो वहां पे कुछ मैचेस खेले एंड दे जो देन दे नेक्स्ट प्ले इनटू द यू कैन से आई लीग 2 जहाँ पे प्रॉपर आप लीग फॉर्मेट में खेलते हो। बट जो स्टेट लीग में जो बाकी जो आपके क्लब्स है, जो एक एक क्लब तो आपका क्वालिफाई होके कंटिन्यूअसली पूरा साल खेल रहा है, बट व्हाट अबाउट द अदर क्लब्स, जो बाकी बचे जो 8 to 9 क्लब्स है कि जो आपके नेशनल लेवल पे क्वालिफाई नहीं हुए, उसके लिए फिर रिमाइंडर ऑफ द सीजन में क्या करना, क्योंकि आपकी स्टेट लीग तो 2 मंथ ही चलती है। तो फिर बाकी के मंथ में उन प्लेयरों को हमने देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे करते हैं, जबकि आपको कंटिन्यूटी वहां पे भी लानी पड़ेगी। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? Yeah, no, I makes sense. Hiren, what I seen at least in Bangalore is, I know there are a lot of players who are playing. So, for example, Bangalore's top division is the Super Division, and you got A Division, B Division, C Division, and then you got TAL, which is the amateur league in Bangalore. I think, if I'm not wrong, again, if somebody is from Bangalore and has a better idea, please do correct me if I'm wrong. But if I'm not wrong, there are people who work and play football. So it's not like just because the football is shortened, then people don't play. But still, there is training even for super division teams when the season is off. So I know a couple of people who play A division, for example, a couple of friends who come and play, and I've seen these guys. There is training even during off season, and and these guys are actually enrolled in college. There's some of them are enrolled in college, some of them are doing other things. They're working, so they're not per se full time professional footballers. So that's how it is in Bangalore, at least. I'm not too sure about other teams. But as far as I know, a couple of people I've spoken to, I know in the system, this is how it works here, at least. Shaggy is also here in the chat. Shaggy, again, correct me if I'm wrong, but people who are playing A division, B division, C division, they're also in college or they're doing something else. And of course, there is training even when the leagues are not going on. Hiren's question was what happens when sort of teams are not playing the leagues in Bangalore. But that's, I think, what happens. And as far as I know, at least the friends that I've interacted with, this is what happens, Hiren. Not too sure about other states. Do you have any idea about any other states as to what is happening there? आई थिंक अगर आप देखें कोलकाता में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर देन प्लेज इन दिस हाफ Yeah. टूर्नामेंट्स। सो आई थिंक उस तरह के जो प्राइवेट टूर्नामेंट्स और उसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर आर प्लेइंग व्हिच इज यू कैन से कि in terms of the FIFA's regulations is not the right thing. You can't play in every other tournament. बट आप देखिए कि आई थिंक स्टेट एफएस का स्ट्रक्चर है, आई थिंक उसके इसके बाद मेरे को लगता है कि देयर शुड बी क्वेश्चन एंड वी नीड अ बेटर स्ट्रक्चर एट दी ऑल दी स्टेट लेवल आल्सो, सो Yeah. टू गेट अ रिजल्ट। बिकॉज अगर आप देखें आई लीग 3 में भी जो टीमें क्वालिफाई की है उसमें भी 3 ही टीमें आई लीग 2 में जाने वाली, बाकी टीम क्या करेगी फिर पूरे सीजन? उनका Yeah. सीजन तो दिसंबर में फिर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 4-5 मंथ क्या करना है उसको? अपने स्टेट लेवल पे कोई प्राइवेट टूर्नामेंट ऐसा ऐसा होगा, प्लेयर वहां पे जाकर खेलेगा, वो तो क्या ही कर सकता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ लीग देन। सो आई थिंक वो जो एक फ्लो है उसको कैसे भी करके यहाँ पे एएफएफ को स्टेट एफएस के साथ बात करके उसको कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि फिलअप करना पड़ेगा, कि जहाँ पे एक जो कंटिन्यूटी है, जो टीम क्वालिफाई कर गई उसके लिए आई थिंक उसके बाद ये जो आई लीग 3 का जो प्रोमोशन प्ले ऑफ है फॉर द आई लीग 2 उसको आप रिमूव करके ऐसा कर सकते हो कि इस सीजन का मान लीजिए कि बेंगलुरु या फिर बेंगलोर का सुपर डिवीजन का जो इस सीजन का विनर है वो नेक्स्ट सीजन आई लीग 3 में खेलेगा। Hmm. नेक्स्ट सीजन आई लीग 3 में अभी क्या चल रहा है कि इसी सीजन का आपकी स्टेट लीग का विनर इसी सीजन आई लीग 3 में खेलता है और उसी सीजन में क्वालिफाई करके फिर आई लीग 2 में भी खेलता है। Hmm. तो जो एक ही सीजन में आप देखिए कि बेसिकली वो खेल रहे थे, बाकी क्लबों को फिर क्या बोलते कि मैचेस नहीं मिल पाते। अगर उसको आपको क्या बोलते कि उस फ्लो को यहाँ पे उस गैप को क्या बोलते कि वो करना है फिल, देन आपको क्या करना पड़ेगा कि इस सीजन का आप स्टेट लीग ऐसी बनाइए कि जो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ चले, एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स, उससे ज्यादा ही Yeah. चलनी चाहिए। अगर इतना चलेगी और इस सीजन के जो विनर होंगे वो नेक्स्ट सीजन अगर आई लीग 3 में क्वालिफाई होते हैं, देन आप ये जो गैप है इसको आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कर। Yeah, and Shaggy is also clarifying that there are people who are also into coaching, and Bangalore has a lot of academies, of course. Yeah, I've seen that locally also. A couple of guys who do play Super Division, they do coach here as well, close to home. Also saying that state MAs have to put in some seriousness because a lot of Tamil Nadu players are playing in Karnataka because of
lack of league locally, and I think that's a problem with a lot of states. दैट्स माय Yeah, yeah, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट राहुल की अगर आप स्टेट आपको आपकी एक टीम क्वालिफाई कर गई तो बाकी जो क्लब्स है उनके प्लेयर को फिर कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं ऐसे वैसे टूर्नामेंट ढूंढ के उनको खेलना पड़ता है और जो एक प्लेयर का एक आपको भी पता है कि अगर जब तक वो लीग स्ट्रक्चर में उस हिसाब से नहीं खेलेगा अंडर वन क्लब और एकेडमी उसका उस हिसाब से प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं होने वाला है सो yeah, दैट इज माय एग्जैक्टली पॉइंट कि उसको किस तरह से आप फील करेंगे yeah. एंड अनदर पॉइंट राहुल आई वांट टू ब्रिंग इज दी स्टिल ये कैलेंडर यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ तो इस सीजन का भी जो हमने देखा था वो काफी लंबे टाइम से द मेन अभी भी जो फ्लो है वो है यहाँ पे आपका अंडर 17 से अंडर 21 के बीच में एक भी कॉम्पिटिटिव लीग ना होना दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल अगर जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको जो इम्पैक्ट आप देखना चाहते हो दैट विल नॉट Yeah, yep. I think completely agree. I think youth leagues, regardless of where you are, which country, I think youth football is probably the most important thing to sort of develop your country's. I mean, step up the progress in your country's football. And yeah, Neeraj. Uh, I mean, moving on. Okay, Hiren. Apart from this, the IWL 6 month window. Happy with that? Long enough league for आई the थिंक IWL. I think India is one of the few countries in the world की जहाँ पे वुमेन्स लीग अब इस फॉर्मेट में मतलब there are a very few countries in the world where वुमेन्स की जो लीग है वो इतने प्रॉपर तरीके से होती है and I think from this season I think जिस तरह से वो चेंज देखने को मिला है I think that's a big positive step to be honest and वो उसको नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू किया है सो दैट्स अ गुड साइन फॉर वुमेन्स फुटबॉल टू बी ऑनेस्ट बिकॉज आई थिंक वो एक प्रोफेशनल लीग होना किसी भी फुटबॉल कंट्री में फुटबॉल ग्रो करने के लिए सबसे इनिशियल या फिर आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप होता है एंड आई थिंक इन वुमेन्स फुटबॉल वी हैव यू कैन से कि फर्स्ट कम एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ दी कि अभी अगर आप देखेंगे काफी सारे लोग पूछते हैं कि व्हाई आवर वुमेन्स टीम इज इन द 68 और 65 फीफा रैंकिंग इतना कैसे वो मतलब आगे बिकॉज थोड़ा सा आपको जो अर्ली एडवांटेज है इंडियन फुटबॉल ने भी वुमेन्स फुटबॉल के ऊपर थोड़ा सा अर्ली फोकस करना चालू किया एंड अभी भी आप बाकी भी देखिए आप यूरोपियन कंट्रीज पे तो भी वहां पे भी अभी वुमेन्स फुटबॉल को इम्पोर्टेंस देना यहाँ पे पिछले कुछ सालों में ही हुआ है उससे पहले उतना ज्यादा वो सेंटर पॉइंट नहीं थे कि वुमेन्स फुटबॉल भी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी अब बाकी क्लब्स के लिए भी यूरोपियन क्लब्स एंड कंट्रीज के लिए भी वुमेन्स फुटबॉल भी एक अहम हिस्सा बन चुके हैं सो कहीं ना कहीं इसीलिए हम वहां पे आ गए एंड वी हैव ए वेरी गुड चांस कि अगर हम इस कुछ आगे आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे और ज्यादा फोकस करेंगे वुमेन्स फुटबॉल में then we Yeah. will definitely you can say do well in that section also. Yeah, just going to ask you again about women's football, but before that, Jordan have scored against South Korea and they're leading 1-0. Okay, that's a good. But But first half was a brilliant first half. South Korea made it a habit to concede, हाँ, sit, and concede. hit late. Hmm. Uh, but yeah, back on women's football, Irene, what have you made of the IWL this year? I know we haven't spoken too much about women's football over the last couple of weeks, but what have you made of the IWL? I watched a few games, and Same, I same. could I see, also watched few games. but I could see what Arnava was talking about in terms of lack of like the disparity is a lot sometimes, and even sort of what has to be drilled into the players and certain basic things. I feel like I did go to the stadium for a couple of games, and it is not, I think, at the level that it probably can be. I think there's a lot of improvement that can be made in women's football, and yeah, what have you made of the games? I think सबसे पहली चीज तो हमें ये यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इफ यू सी दिस इज द इन अ टेक्निकल वे दिस इज द फर्स्ट सीजन ऑफ द आईडब्ल्यू Yeah, इससे yeah, पहले चार पांच आई थिंक दिस इज द सेवंथ और एट सीजन तो उससे पहले जो सीजन हुए दैट्स नॉट बेसिकली योर लीग दैट्स द बेसिकली टूर्नामेंट जिसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलता बट दिस इज अ फुल फ्लेज सीजन कि जहाँ पे आप होम एंड अवे बेसिस पे 7 टीमों के साथ खेल रहे हो सो दैट्स अ पॉजिटिव चेंज आई वुड से एंड दूसरी चीज यहाँ पे है कि आई कंप्लीटली एग्री विथ यू देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द लीग की जो यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए टू बिकम ए मोर प्रोफेशनल लीग एंड बेटर तरीके से और कंडक्ट भी हो सकती है एंड जो आप देखना चाहते हो बट उसके लिए आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को लगता है कि टाइम लगेगा अभी एंड उसके लिए यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव सीन कि एआईएफएफ के जितनी भी लीग वो ऑर्गेनाइज करता है कहीं ना कहीं उसमें वो फ्लो आते ही सो यू नीड ए प्राइवेट प्लेयर टू हैंडल ऑल दी यू कैन से कि लीग्स आप आपकी जो
जैसे आईएसएल अगर आप देखें रन होता है प्रोफेशनल वे में, उस तरह से रन करने के लिए। सो आई थिंक आईडब्ल्यूएल में भी वो जरूरत है, एंड तब जाके थोड़ा सा जो आप इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग वाइज या फिर इन टर्म्स ऑफ द स्टेडियम कंडीशन एंड एवरीथिंग, आई थिंक विल बी मच बेटर। वी सीन दैट आम्बेडकर स्टेडियम कंडीशन, दैट वाज मतलब आई थिंक अगर आपका टॉप लीग उस स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो बाकी लोअर लेवल का तो क्या ही हम एक्सपेक्ट करें। तो आई थिंक ये सारी चीजें तभी चेंज होगी जब थोड़ा सा मनी का इन्फ्लक्स होगा, एंड थोड़े से और ज्यादा क्लब्स यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अपनी वुमेन्स टीम पे में इन्वेस्ट करेंगे, कोई प्राइवेट मार्केटिंग प्लेयर या फिर कोई इस तरह से ऑर्गेनाइजर आएगा, तो आई थिंक बेटर तरीके से वो सारी चीजें हैंडल होगी, एक बेटर वे में वो लीक होती हुई दिखेगी। Yeah, Shaggy Singh, watch Gokulam Ke Alawa Odisha FC. The top two sides in the IWL will go head to head, and it'll be interesting. Um, Hiren, of course, this is the calendar, and this is what we've got for next season. Looking interesting, looking forward to it. We'll see what comes from it. What is going on with the AIFF? What is happening within the AIFF now? Let's move on to the Indian national men's team and discuss them and the problems associated with that. What is happening right now? What has happened today? What have we आई learned? थिंक आई थिंक इंडियन फुटबॉल में अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो ऐसा कोई दिन होता नहीं है बेसिकली, एंड आज भी एक बड़ा मतलब एलिगेशन ऑन द एएफएफ एंड ऑन द प्रेसिडेंट यहाँ पे, जो एएफएफ के लीगल हेड है, लॉयर है, नीलंजन, उन्होंने यहाँ पे लगाया है, उन्होंने एक मेल भेजा है टू एएफएफ प्रेसिडेंट, एंड वहाँ पे उन्होंने उनकी सैलरीज जो बाकी है, बाकी जो एएफएफ में जो डील्स हुई सारी, चाहे वो इंडिगो वाली डील हो, चाहे वो आई लीग के ब्रॉडकास्टिंग की डील हो, there are 2-3 other deals also, जो उन्होंने उस मेल में सारी चीजें मेंशन की है कि वहाँ पे उनका वो जो साजी प्रभाकरण का केस भी हुआ, वहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि मेरे से कोई ऐसे यह लीगल हेड में हूँ तो मेरे से कोई राय नहीं ली गई, और काफी सारी चीजें यहाँ पे उस कोऑर्डिनेशन में नहीं चली, तो काफी सारे उन्होंने एलिगेशन सारी चीजें रखी है। सो आई थिंक वो जो इंटरनल फाइट है वो अभी भी कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक एंड इसीलिए आई थिंक अरुणा सर और हमने पिछले आई थिंक 1-2 वीक में काफी बार ये बोला है कि यू नीड ए लीडरशिप विद द राइट नॉलेज, राइट इंटेंट, एंड जिनको ये सारी चीजों के बारे में पता हो, ऐसे लोग अगर आएंगे तो ज्यादा इस तरह की जो चीजें हैं उसके उससे आप बचोगे, एंड आपका जो फोकस है वो इंडियन को क्या बोलते डेवलप करने में ज्यादा रहेगा, रादर देन इन्वॉल्विंग इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो Yeah, उनका एक काफी इंटरेस्ट एलिगेशन उनको उन्होंने काफी सारे लगाए हैं, एंड कल्याण चौबे का ये रिप्लाई आया है कि इट्स अ डेली मैटर, मेल तो कोई भी सेंड कर सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। सो लेट्स सी आगे क्या सारी चीजें होती है, बट ज्यादा कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से, आई थिंक। but this salary issue is something I think that is concerning. I think the money factor is for me also concerning, because we seen this season with ISL without any sponsor, Hero is backed out, FSDL I don't see, मतलब I think जिस तरह से वो अभी वर्क कर रहे हैं, I think they also lose the interest, and next year their deal is ending. There is no communication between AIFF and FSDL regarding the renewal of the deal or whatever the thing is going to happen. So there are a lot of uncertainty regarding the Indian football, and वो I think AIFF को, जब तक AIFF एक आप देखें कि लोगों को इन अ सेंस कि जो भी वो बंदे इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको अगर वो एक विजन वो नहीं दिखा पाएंगे, तब तक आपके लिए मुश्किल है कि आप इंडियन फुटबॉल में पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए किसी को भी कन्विंस कर पाओगे, एंड अगर ये सारी चीजें आपकी इंटरनल सेटअप में इतनी ज्यादा हिली डुली हुई है, तो कोई भी क्यों ट्रस्ट करेगा कि इंडियन फुटबॉल में पैसा इन्वेस्ट किया जाए। सो दैट इज द वन ऑफ द बिग चैलेंज, जो आई थिंक जो फाइनेंशियल या फिर जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द फ्यूचर, दैट नीड्स टू बी आल्सो sorted out, otherwise it will have a, you can say, very bad repercussion on the Indian football. yep. Again, next steps will be interesting to see what happens, whether this goes forward. Of course, payment of salaries is a big deal, and um, yep. Although, I mean, regardless of what, I think Kalyan Chobe says that I don't think anybody would just randomly come up and sort of speak out. Yeah, Hiren, you were saying something. He's a lawyer. He's a lawyer and Exactly. AFF legal Exactly. aid, so he knows Exactly. everything. He knows what. What I want to understand from you, because we have a couple of times heard that the Bengaluru or Karnataka has a better, you can say, key setup in terms of the league structure wise. You already mentioned about the senior structure. I want to know about the youth structure, how the youth structure works. How is there an under 13 youth league?
what is the district level league? How the setup of the youth level? Yeah, so at least in Bangalore, this is how it works, the youth system. If I'm not wrong, we have matches. Just give me a second. I'll confirm that for you. I know for a fact that it starts from around under 7 or under 8, and it goes Hmm. on until under 15, under 17s. This again, the number of games are varying. So my brother plays under 13 football. He plays. They play say once, sometimes every Saturday, but sometimes once in 2 Saturdays, and this goes on for about 3 months. It's not a very big Okay. long league. 3 to 4 months is what is how long this goes on for. So that's how it basically is structured. But the it's good in a way. They play so under 13s play 9-a-side football, under 11s play 7-a-side football. So it's structured in a way that they get the right exposure that they need, and it's not a short game by any means. My at under 13 level they're playing 60 minutes. Sometimes Hmm. plus added time you play around 65 minutes, 65 to 6, sometimes 70. So for those kids I think it's a big deal to get minutes on their legs and to feel uh, there are people watching. There are sometimes people shouting from the stand, so it's very interesting for a young kid to sort of take in all of that and play, which is nice. And yeah, that's basically how I'm just trying to get the document out to confirm to you guys as to where Okay, exactly it I think starts. Parmeshwar make a right point. I think that's the one of the, you can say, key drawback that needs to be changed in Karnataka FA is it's more centric to the Bengaluru, just like Yeah, in that's true. Maharashtra. Yeah, this. Totally centric to Mumbai, because I think the thing is कि बेंगलुरु मुंबई में क्या होता है कि एकेडमीज ओपन करना रिलेटिवली इजी है. यू गेट अ स्पॉन्सर इजीली, यू गेट अ फैसिलिटीज इजीली. सो दिस आर द थिंग्स जो आपको इजीली मिल जाती है. एंड बाकी जो कर्नाटका का रीजन है उसमें फुटबॉल को लेके जाना पड़ेगा. दैट्स आई कंप्लीटली एग्री परमेश्वर Yeah, भाई. यू नीड टू, जैसे बंगाल में भी अब मोस्ट ऑफ दी यही रह गया है कि इट्स कोलकाता सेंट्रिक. बाकी yeah, पार्ट्स में खेला जरूर जाता है बट उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती. वहां से प्लेयर उतने ज्यादा स्काउट नहीं किए जाते, उनको उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता. जबकि जो लीग्स भी होती है, अगर आप देखिए वाफा का भी वही इश्यू है कि महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मुंबई से ही क्लब आगे जाते हुए दिखेंगे. देयर इज अ कोल्हापुर इज अ वेरी गुड रीजन कि जहाँ पे फुटबॉल इतना बढ़िया है. बट आई थिंक ये सारी चीजें शेगी बोल रहे कि केएसएफ है 11, केएसएफ है 13, केएसएफ है 15, केएसएफ है 17 ऑफिशियल टूर्नामेंट्स. ओके, yeah, दैट्स अ yeah. गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग. Yeah, but there are leagues for 7 and 9 as well. Again, not too sure about exactly how it's run, but there are leagues for यस seven and यस, nine. आई थिंक रिसेंटली वो उसका भी अनाउंसमेंट हुआ था. यस, दे स्टार्टेड अंडर 7 एंड अंडर 9 लीग्स Yeah, yeah. आल्सो. So Shaggy mentioned the districts as well: Belgaum, Dakshin Kannada, and Bengaluru. Um, Yeah, but again, I think things have changed. It was not like this a few years back because I know a couple my friends who played football, who played junior I league, and before it was not like they used to travel for I league games because some they had to travel to Bangalore, sometimes Belgaum, like Shaggy just mentioned, and sometimes games were in Bangalore. So that time the major clubs in Bangalore were Roots, BFC, Ozone was there, and so yeah, and then sometimes outside clubs from outside, so they had to travel. It's changed now. Of course, you have these more organized leagues, so that way I think it has improved. But again, I'm not too sure about outside Bangalore what exactly is happening. Somebody else would probably be better to answer that. But yeah, this is what it looks like right now. Apparently, BFC did try to run soccer schools in Bangalore. Bangalore has potential, and Nikhil Pujari is of course from Bangalore. So yeah, and Bangalore football is certainly better than it was 10 years back. That also I agree. I think a lot of people who played football growing up in Bangalore have told me that right now it's much better. So that the structure is better. नहीं नहीं, The way, उसका इम्पैक्ट आपको दिखने को भी मिल रहा है ना. लास्ट ईयर यू वन दी संतोष ट्रॉफी. yeah, एंड आई थिंक there is a, if you see in women's also there is a lot of club. In I League there is a two clubs. In ISL you have a clubs. So I think that clearly shows there is a, you can say, development in last couple of years in the football, yeah. definitely. But again, just watching youth leagues, just watching Kickstart play, I think that club, the way everything is happening for Kickstart, it's probably I just really see that this club might just be the next thing, big thing in Indian football. Not only in men's football, junior football, men's football, women's football, they're there everywhere, and it really looks They like a were very, but they are arch rival in both sense. Yeah, you supporting Bengaluru.
They are True. kickstart and they also partner with the Spurs. So you have Spurs, a yeah. you can say double rivalry. True, true. But I'm just saying, I think it is. I know you're right, Hiren, but just in general, I think Kickstarter doing a lot of things right. They've, I think, opened 211. They have their set 211 aside grounds Yes. now, so that's great. Mm. I have a couple of guys from my apartment who play for Kickstart, who play for the academy. So it's they're saying that the club is going well. So hopefully that really develops. And yeah, Shaggy was saying Bengaluru filled with rivalries. FCB was there. SCB was another team. Sporting Club Bangalore is also there. So we've got a couple of good clubs, and it'll be interesting to see how Bangalore football develops in the next few years. Yeah, Hiren, we've also got ISL action tomorrow, which I completely Mm. forgot about. It's Bengaluru FC versus Chennai, and it's in at Bangalore. What do you think? I think if you see both the teams' scenario, I think Owen Coyle made a statement that we have tried so too much to sign player in January transfer window, but there is a you can say we just don't want to sign for sake of it. We want a quality player. Yeah, So I think Chennai FC has a couple of you can say ups and downs while first half of this season. So second half would be an interesting one how they are going to start. And for BFC, that lost against Punjab FC, I think really disappointing one. So they need to get back on track, and this is their home game. So for them, for me, I think they must win game for them to remain on their sixth position fight. So in that case, I think they need to go all out. yeah. Anush is saying Chennai will win. They're more stable. Um, the funny thing is, regardless of how bad the season has been for BFC, we haven't lost too many games at home, which is again hopeful. And I just hope that we turn. Apart from that Mumbai thrashing that we received 4-0, I don't remember too many bad, like really poor performances at home. So hopefully the boys turn up at home, and we can get a performance in. And Nikhil Pujari should start this game, Hiren. You think that will make a difference? Sana will start and Nikhil will start. You think this will make a difference? I think so. I think so. You need to go with Sana, Nikhil, Roshan, and either of the two foreign center back. One of the center back. So I think, and I want to see Vijay Kindrop to be honest as a defensive midfielder. I think that will give you more stability in the defense. So I want a foreigner of uh, Damjanovic or Jovanovic. Either one of them is fine for me. Vizia Kindrov, Xavi Hernandez, and Drost is available. That's a good. I think Yeah, two player can make a you can say debut. Nikhil yeah. and Drost both are available. So maybe you Uh, can start with him or Ryan Williams. So these are the my four owners. I'm not sure if Kezia is available though. Wasn't in the squad Okay. last time out, so it'll be interesting to see. I'm not too sure Then to if you have to go with the Suresh and Kezia is I not think there. Rohit. As far as I know, is what Mm. Shaggy is also saying. So it means that you'll have to go with Ryan, Javi, and the two defenders. I don't mind Mm. seeing Damjanovic at left back. I don't know why, but it just seems interesting, and it's not a bad option. He's not done too badly there. So yeah, it'll be interesting to see if he does that. Allows Roshan to play forward. He can play on one of the wings then. Sunil Chetri's place under threat. Kiran, you think with Oliver Dross coming in? I think so. I think so. I think that will be interesting decision for Zargoza to make the to start with Sunil Shetty or use him as a substitution. I think that will be the more impact to be honest. As last season जिस तरह से साइमन ग्रेसन ने यूज किया था. So I want to see मतलब I want to see Siva Shakti more. I think you Hmm. need to give a chance for. I think Monirul Molla is one of the player I have impressed. To be honest, Yeah. he lacks little bit physicality, but other than that, he has some interesting you can say gameplay. He's a willing runner, and it'll be interesting to Mm, see if he. I'm again, Shaggy saying Damano is not a problem, but I agree. But weirdly, the way he was used in Super Cup, he didn't look too uncomfortable, which is what mm. it looked like to me. That when he was playing at left back, he seemed okay, and
he's got a good left foot, weirdly, but he just overhits crosses. I've noticed. Of course, he's a centre back. He's not a left back, which is why he's overhitting crosses. But I think weirdly, if that hybrid position works out for him, and if he can sort of be a little more dynamic and play left back, opens up a lot of options for BFC, and it allows you to play Roshan up front. Just let him run, Mm. let him take on defenders, let him be a threat going forward. So it'll be interesting to see what happens. Harvey needs to deliver a performance tomorrow in front of the crowd. I think that hopefully the fans will be behind Nikhil, of course, and he can put in a good performance. But I think Rahul for fans will be not I think much because I think it's a Weekday, yeah, yeah, weekday yeah, game. Hmm. yeah. Yeah. Going to be interesting, but whoever is there, let's see. If Zaragoza fails to finish top six, will he be sacked? I don't think so. I mean, I wouldn't at least It want doesn't make him. sense. Then I think then you choose him as in first place is a wrong decision. If you don't see with the you can say ki long project where just in 6 months you are you can say ki come to the conclusion that we are not going with him. Then I think this is your mistake rather than a coach mistake. Exactly. I don't think you can sack him after 6 months. You have to give him time. Yeah. He's basically just come in. He's got one Super Cup to work with. He's not done anything else. Now he has the full team back, so it's you have to give him time. And I think over the summer he can. I'm not going to be judging him based on the season. Yeah, Shaggy again saying that Damanu's got a good left foot. Zaragoza doesn't have faith in Jessel, which I feel is the same case. I don't have faith in Jessel, to be honest. Hiren, what have you made of Jessel Carnero? You think uh, I didn't see him much in this BFC, sir. So yeah, in Kerala Blaster, I think he is a captain and he was captain and he done quite well to be honest. I think, but here he didn't. He's a you can say a player like this old guard of Indian team, Rahul Beke or yeah, similar kind of that kind of you can say Seriton or similar kind of a you can say fullback. It's not a modern fullback where you see a more attacking overlapping run and all of this thing. So I think age is also a little bit catching him up. So I think that's also mm, one of the factor to his performance down trajectory. So, but I think he's a you can say experienced guy. So you can use him as a you can say backup or as a substitution rather than starting 11 player. first game back for Chennai after the break. Hiren, what are you expecting from them? I think Owen Coel's team, if you see Chennai FC team, they have some quite interesting players in terms of the Indian player also. They have Jiteshwar, Ayush Adhikari in midfield, two of the promising Indian midfielder. Front line they have Rahim Ali and that I think strike में winger का नाम भूल गया उसका. I think interesting winger which selected for the you can say कि probable list of 50 player also. So they have quite some interesting Indian player. But as an overall team, I think Rafael Cliveraro has a you can say ups and downs in performance. Sometimes he performs really brilliantly. Then next match he is completely looks out of touch. So these are the players needs to step up. And then I think the biggest weak link for me is Chennai FC's defense. To be honest, they try with the you can say Edwards and Sivkovic both, but still they didn't able to you can say not able to prevent the goals. So I think that is the one of the area where I see they are struggling a little bit more. So let's see how Evan Girls this period of Super Cup has worked with the team and how he's going to perform in the second half. Yep, it's going to be interesting to see. I can't say 2-1 to Chennai. What do you say, Hiren? Who's taking this one? I'm seeing 1-1 draw. Okay, 1-1 draw. Interesting. It'll be fun tomorrow. And yeah, guys, please do like and share these videos. Subscribe to the channels. Curious Harry, Sports Khabri, and Arun Foot. My camera is also giving in. I think just as we end. But yeah, we'll be back tomorrow, guys. Thanks so much. Good Good night. night, guys.